ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। नांदेडमध्ये पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याचा प्रकार घडलेला आहे। नांदेडमधल्या मातासाहेब गुरुद्वाराजवळ हा जीवघेणा हल्ला झाल्याची माहिती मिळतेय। या हल्ल्यानंतर सुखबीर सिंग बादल यांना खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलेला आहे। नांदेड पोलिसांकडून सध्या हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या सगळ्या संदर्भात नांदेडच्या पोलीस अधीक्षकांसोबत चर्चा देखील केलेली असून या हल्ल्याच्या अनुषंगाने चौकशीचे आदेश देखील दिलेले आहेत। दरम्यान या हल्ल्यामागचा नेमका हेतू अद्याप अस्पष्ट आहे। आरोपींचा शोध सध्या नांदेड पोलिसांकडून सुरू आहे। परिसरातल्या परिस्थितीवर पोलिसांकडून लक्ष ठेवलं जात असून प्राथमिक तपासामधनं हल्ल्यामागची कारणं स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे। त्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। मुळात ही व्यक्ती ही स्वतः त्या गुरुद्वारामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून काम करते। गुरुद्वाराची मध्ये ते पाहणी करत असताना त्यांच्यासोबतच ही व्यक्ती तिथे सकाळपासून होती। त्यामुळे असं कोणी बाहेरची व्यक्ती तिथे ऍक्च्युअली शिलंटने हल्ला केला असं नाही। तिथल्या त्या गुरुद्वारामध्येच काम करणारी ही व्यक्ती होती आणि त्यामुळे कदाचित आता त्याच्यामध्ये हा सिक्युरिटी लॅब्स आहे किंवा नाही आहे हे चौकशीच्या अंती आपल्या लक्षात येईल। अचानक वो हमला कर देता उन पे और उनको बहुत हाथ पर उनके चोट आई है और बहुत शर्म की बात है जो गुरु महाराज के दर्शनों को आने के बाद में इस तरीके की काम होता है और उनको Z+ सिक्योरिटी रहने के बाद में भी इस तरीके की घटना हो गई। तो इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु घर में आने के बाद में किसी के भी साथ में नहीं होना चाहिए। आज लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे। तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहां से वापस आते वक्त सीढ़ियां के पास एक वहां का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने किरपान से अटैक करने की कोशिश की। हमला जो सेवादार के पास किरपान होता है उस किरपान से ही किया और हमले का रीजन अभी तक उसने कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसा डिटेल रीजन बता नहीं रहा है। हमारा इंट्रोगेशन उसके साथ चल रहा है और उसके पीछे की पूरी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।